जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय जय यशोदनंदन जय व्रजजनरंजन। जय यशोदनंदन जय जय यमुनातीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुनातीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुनातीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुनातीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव 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 जय कुंज बिहारी। जय श्री श्री राधा माधव की। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नस्तप्रायेष्वभद्रेषु नमस्कृतायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।
So we welcome the devotees today, and we will read from fifth canto, 6th chapter, and the verse will be 12. Is Krishna not here? He's coming back. I will start first. Ayam avataro rajo, ayam avataro rajaso paplutaha. Kaivalyo pakshishanarta. Ayam avataro rajaso papluta. Kaivalyo pashikha. Kaivalyo pashiksanarta. Ayam avataro rajaso papluta. Kaivalyo pashiksanartana. Ayam avatara. This incarnation, Lord Rishabdev, Rajasa, by the mode of passion, Upapluta, overwhelmed, Kaivalya, Upashikshana, Artha, to teach people the path of liberation. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. In this age of Kali, people are overwhelmed by the modes of passion and ignorance. Lord Rishabdev incarnated himself to deliver them from the clutches of Maya. I'll read the purport. The symptoms of Kali Yuga are predicted in the 12th canto, 3rd chapter of Srimad Bhagavatam. Lavanyam Kesha Dharanam. It is predicted how fallen souls will behave. They will keep their hair long and consider themselves very beautiful, or they will pluck out their hair as the Jains do. They will keep themselves unclean and will not wash their mouths. Jains refer to Lord Rishabdev as their original preceptor. If such people are serious followers of Rishabdev, they must also take his instructions. In the 5th chapter of this canto, Rishabdev gave his 100 sons instructions whereby they could become free from the clutches of Maya. If one actually follows Rishabdev, he will certainly be delivered from the clutches of Maya and return home back to Godhead. If one strictly follows the instructions of Rishabdev given in the 5th chapter, he will certainly be liberated. Lord Rishabdev incarnated specifically to deliver these fallen souls. Jai Shri Prabhupada, Transcendental Purports Ki. Can you check if Prasanna is here, or does he want me to? He's not here, right? No, I called him. His call is busy. Huh? I called him. His call is not busy. Okay, no problems. Anyone wants to translate? Who can translate? I said right. You'll try? Okay, good. You need a mic. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manohabhishtam Stapitam yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadamandikam. Vandeham Shri Guru Shri Utapadakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sarvaitam Sarvadotam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute.
तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरे तुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। I'll keep it same like Prasad. I'll say 1-2 lines. You translate. This verse is ending the glories of Rishabdev. ये जो श्लोक है ऋषभदेव भगवान की महिमा का कंक्लूजन है। Oh, we have mic. Wait, otherwise Mataji's can't hear. Just 2 minutes, Mataji's. It's not working. No other mic. Otherwise, we do one thing. Mataji's, can you come here? So far, you can come this side. Yeah. Prabhu's just help to move the mat for Mataji's. Just move the cloth. Now you can sit here. This side. Hold on. Now you have to speak a bit louder. So, here we are finding out the glory of Rishabdev in this verse. इस श्लोक में भगवान ऋषभदेव की महिमा को You sit here. They must hear also. We are talking about the glories of Rishabdev. हम भगवान ऋषभदेव की महिमा की बात कर रहे हैं। According to this very nice shloka, Prabhupada is describing to us, and Shukadev Goswami is telling us, that in this age of Kali, people are overwhelmed by the modes of passion and ignorance. इस बहुत ब्यूटीफुल श्लोक में जहाँ सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं, वो बताते हैं कि कलयुग में सारे जीव है वो रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त है। In this day and age of Kali Yuga, it is very difficult for us to be in the mode of goodness. इस कलयुग में हमारे लिए सत्वगुण में स्थित होना बहुत मुश्किल है। I think the mic is not. Is the mic working? Okay, but now this is off. This is our CA. Yeah, but your mic, is your mic working? I think after Ramnavami, everyone's gone. It's what nobody's doing. I got it. Okay. So in Srimad Bhagavatam, there are two verses that are very important for us to understand this age of Kali. तो श्रीमद् भागवतम में दो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं जिससे हमको कलयुग की स्थिति समझ आ सकती है। In the first canto, 14th chapter,
17 and 18 shlokas. Those shlokas are very important for us to understand what happens in the age of Kali. पहले स्क्रीन के चौथे अध्याय 17वां और 18वां श्लोक में हमको समझाया गया है हरे कृष्ण। कलयुग की अवस्था कैसे। So I was saying that this shloka tells us that in the age of Kali, we are actually in a big disadvantage. मुझे लग रहा है कि इस श्लोक में ये बताया गया है कि आज का युग इसमें बहुत बड़ा हमारा बदलाव है। Disadvantage means we are trying to become devotees, but there are many obstacles in our path. ये लाभ ये है कि हम भक्त बनने का प्रयास करें, लेकिन हमारे भक्त बनने के प्रयास में अड़चनें बहुत हैं। So at the beginning of Kali Yuga, Vyas Bhagavan sat down and meditated. तो युग की शुरुआत में व्यास भगवान बैठ गए और उन्होंने ध्यान किया। And you all know that he was also very disturbed, even despite compiling all the Vedas, all the Puranas, all the Itihasas. और आपको पता है कि व्यासदेव इतना सारा पुराण इतिहास सब कुछ लिखने के बावजूद भी वे संतुष्ट नहीं थे अपने अंदर। But before he did that, he was looking at this Kali Yuga and he was thinking, what is the most difficult challenge in Kali Yuga? लेकिन उन्होंने ये किया लिखना शुरू किया, उससे पहले उन्होंने देखा कि कलयुग में क्या क्या बाधाएं हैं। And he said in 114, 17, 18, Bhautika Nam Cha Bhavana. और पहला स्कंद 14 अध्याय और 17 और 18 श्लोक में उन्होंने कहा है भौतिका नाम से भावना। In this shloka, the sage Vyas Bhagavan, he is telling us that the biggest symptom of Kali Yuga is deterioration. और इस श्लोक में व्यासदेव कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो दुर्गुण है इस कलयुग में वो है सब चीज़ों का नाश। Everything in this world will deteriorate. सभी चीज़ों का नाश होगा। Shakti Rasa, the Shakti of this world, the nature of this world, the power of this world is that whatever you have, it will have to go. ये भौतिक जगत की शक्ति ऐसी है, जो कुछ भी शक्ति इधर है, उन सभी चीज़ों का शक्ति ह्रास होगा। If it does not go immediately, it will reduce and reduce and reduce. That is meaning of deteriorate. ये ह्रास का मतलब ऐसा होता है कि वो तुरंत नष्ट नहीं हो जाता, धीरे धीरे क्रमशः कम होता जाएगा, ह्रास होगा। That is why you find it is very difficult to maintain devotion service. और इसलिए आपको लगता है ऐसा पाया जाता है कि भक्ति में सेवा करना कठिन है। In Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, devotees, they could more easily maintain devotional service than Kali Yuga. सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग में भक्ति लोग अच्छी तरह से भक्ति में सेवा को परिपूर्ण कर पाते हैं। Because the Shakti of this yoga is that everything deteriorates. लेकिन ये कलयुग का जो शक्ति है, वो शक्ति ही ऐसा है कि हर एक चीज़ का वो नाश करता है। So if we are not careful, if we are not vigilant to take care of our devotional service, then because of Kali, the whole nature is such that we will come to temple 1 day, 2 days, 3 days, then deteriorate. 1 day we won't come, then 2 days don't come, then 3 days we don't come. तो मान लीजिए हम मंदिर भी आते हैं, मंदिर आने में भी हमारी कलयुग का स्वभाव ऐसा है, हम अच्छी तरह से भक्ति यदि नहीं कर पाते तो क्या होगा कि हम 1 दिन आ रहे हैं, 2 दिन आ रहे हैं, फिर 1 दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 3 दिन नहीं आएगा, इस प्रकार नहीं आने का जो अवधि है वो बढ़ जाता है। But if you read the shloka very carefully, you will find that Prabhupada translates the shloka very nicely. लेकिन यदि आप अच्छी तरह से अनुवाद करेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर पाया जाएगा। Prabhupada says that the deterioration in this age is to all things that are material. ये ह्रास जो है, शक्ति ह्रास इस भौतिक जगत में, वो सभी भौतिक चीज़ों में होता है। So if everything that is material is deteriorating, why our devotional service also can deteriorate? यदि भौतिक चीज़ों का ह्रास होता है तो हमारी भक्ति का क्यों ह्रास होता है, या तो क्यों दुर्बल हो जाता है? Devotional service is spiritual, it is not material. भक्ति में सेवा तो आध्यात्मिक है, वो कभी भौतिक नहीं होती। So why is it deteriorating? तो क्यों हमारी भक्ति चल विचल हो जाती है? Because when we take up devotional service, we have material motives in our heart.
क्योंकि हम जब भक्ति में सेवा को अपनाते हैं तब हमारे अंदर एक कोई न कोई भौतिक हेतु होता है। When we come to the temple, we come to the temple for name, fame. We want something from people. We want post, we want position. So like this, our bhakti will deteriorate because it is material. It looks spiritual, but actually it is material. जैसे कि हम मंदिर आते हैं तो यदि कोई मान प्रतिष्ठा के लिए आते हैं, प्रसिद्धि के लिए आते हैं, कुछ पाने के लिए आते हैं, तो इन सभी चीज़ों के कारण हमारी भक्ति जो है वो भौतिक हो जाएगी। Our relationships also. हमारे संबंध भी वैसे ही हो जाते हैं। In this material world, if we are not careful, we don't put Krishna in the center, every relationship will deteriorate. भौतिक संबंधों में भी ऐसा ही होता है, यदि हम सतर्क नहीं हैं और कृष्ण को केंद्र में नहीं रखते हैं तो हर एक हमारे संबंध ऐसे ही विनष्ट होते हैं। The same thing goes according to the instructions of how much we follow Srimad Bhagavatam, Shastras and our spiritual masters. और ऐसी ही चीज़ श्रीमद् भागवतम, शास्त्र और हमारे आदरणीय गुरु का हम कितना पालन करते हैं उसके ऊपर भी ऐसा ही आधारित है। If we don't follow them, then our spiritual life will deteriorate. यदि हम उनकी आज्ञा का पालन या अनुसरण नहीं करेंगे तो हमारा आध्यात्मिक जीवन भी खत्म हो जाएगा। This is Shakti Rasa. इससे शक्ति ह्रास होता है। Another very important verse on Kali Yuga is found in the first canto, I think first chapter, I think 110, 119. श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के 10वें श्लोक में बताया गया है कलयुग का ऐसा ही सेम वर्णन है। In that shloka, very nicely it is stated, by the sages of Naimisharanya, the symptoms of the age of Kali. नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों के द्वारा कलयुग के लक्षण बतलाए गए हैं। First symptom that Bhagavatam tells us is we all have short lives. पहला जो लक्षण है आपको बताता है कि वो क्या है, हमारा आयु कम है। But why we have short lives? लेकिन क्यों हमारी आयु कम है? Is it because of Kali Yuga? क्या कलयुग के कारण है? Actually, it is because of our habits in Kali Yuga. या तो कलयुग के अंदर हमारी जो आदतें हैं पूरी उसके कारण। Prabhupada writes in the purport of 1110 that 4 things reduce our lives. प्रथम स्कंद पहला अध्याय और 10वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि 4 चीजें हमारे आयुष्य को कम कर देती हैं। First is overeating. पहली है जरूरत से ज़्यादा खाना। So if we like prasadam but if we overeat, some point it will be a problem actually. तो यदि हमको प्रसाद पसंद भी है लेकिन हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें तकलीफ होगी। In the beginning, Srila Prabhupada was feeding his disciples so much prasadam. Keep eating, keep eating, keep eating. शुरुआत में श्रील प्रभुपाद अपने शिष्य को बहुत प्रसाद खिलाते थे, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। But once they became devotees, then he told them to control, control, control. लेकिन जब वे भक्त बन गए सब तब प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि अभी कंट्रोल करो कंट्रोल करो। If we saw our spiritual master Maharaj also was very, very strong in controlling actually. और हमने हमारे आध्यात्मिक गुरु महाराज को देखा है, महाराज भी कंट्रोल करने में बहुत ही निपुण थे। So overeating is definitely a problem in Kali Yuga. ये अति आहार जो है वो कलयुग के अंदर बहुत ही खराब है। Over sense gratification is the second problem why we reduce our lives. ज़रूरत से ज़्यादा भोग करना ये भी कारण है कि जिससे हमारी आयु कम हो जाए। Everything has its limits. हर एक चीज़ की यहाँ एक मर्यादा होती है। Except for devotional service, everything must be limited. भक्ति में सेवा के अतिरिक्त बाकी सब कुछ मर्यादित होना चाहिए। We are living in limited world, but we have limitless desires. हम मर्यादित जगत में रहते हैं लेकिन हमारी इच्छाएं अमर्यादित हैं। Maharaj said, if you look at all the companies in the world, all the companies are private and limited. महाराज कहते हैं कि आप जितनी भी कंपनियों को देखो वे सभी कैसी होती है, प्राइवेट होती है और लिमिटेड होती है। Even if the big companies are there, they are not private, but they are also limited. बड़ी बड़ी कंपनियां भी रहेंगी, मान लीजिए वो प्राइवेट नहीं रहेंगी, फिर भी वो लिमिटेड तो होती है। So actually everybody accepts that we are limited here, but our mind does not accept it. सब लोग यहाँ स्वीकार करते हैं कि हम लिमिटेड है लेकिन हमारा मन स्वीकार नहीं करता है कि हम limited हैं। So because of that, we are losing our energy. और ऐसा होने के कारण हम हमारी शक्ति खो देते हैं। Third reason why we have short life is because we are over dependent on somebody else's mercy. तीसरी चीज़ है जिसकी वजह से हमारी आयु कम हो जाती है वो है कि हम दूसरों की कृपा के ऊपर आधार रखते हैं। This is not spiritual master's mercy. ये आध्यात्मिक गुरु के बारे में नहीं है। We must be dependent on spiritual master's mercy. आध्यात्मिक गुरु की कृपा के ऊपर तो हमें हमेशा निर्भर
But our problem is we are over dependent on others. लेकिन हमारी मुसीबत यह है कि हम दूसरों के ऊपर जरूरत से ज़्यादा निर्भर रह जाते हैं। Maharaj said, if you have your own clothes, you wash your clothes. Why you have to wait for someone to wash your clothes? महाराज कहते थे कि आपके पास आपके खुद के कपड़े हैं तो आप खुद धोइए, दूसरा कोई धो के दे इसका प्रतीक्षा नहीं करते हैं। Actually, Maharaj told me when he was Grihastha, hardly he knew how to cook. महाराज कहते थे कि जब मैं गृहस्थ था तब आगे से ही मुझे कुछ पता था कि मैं कुछ रसोई Because his wife was so good cook, Maharaj said, no need to cook actually. क्योंकि उनकी पत्नी इतनी अच्छी रसोई बनाती थी कि उनको आता ही नहीं। But when Maharaj decided to take Vanaprastha, then he realized that he cannot be over-dependent on anybody's mercy. लेकिन जब महाराज ने वानप्रस्थ लिया तब उन्होंने अनुभूति की कि वे किसी के ऊपर भी जरूरत से ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकते। If he was to be over-dependent on his wife's mercy, then how is he going to be Vanaprastha? How is he going to take sannyas? यदि वे अपनी पत्नी की कृपा के ऊपर भी आधारित रहते हैं तो वे कैसे वानप्रस्थ निभा पाएंगे और संन्यास? So he learned to cook. तो उन्होंने रसोई करना शुरू कर दिया, सीख लिया। And that's why you see Maharaj, all of us who have experience with Maharaj, Maharaj never waited for anyone to do anything. He would just do it himself. और जब तक हम सभी को पता है, सभी ने महाराज को देखा है कि महाराज कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, कोई भी कार्य करते हैं, वो खुद स्वयं आरंभ करते हैं। If someone was there to walk him, he will walk. But if nobody was there, he will walk himself. उनको चला के लेके जाने के लिए कोई होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो खुद चल के जाएंगे। Maharaj told me, even when you take Bhagavatam class, you should not be over-dependent on audience. महाराज कहते थे कि यदि आप भागवत क्लास भी लेते हैं तो क्लास लेते समय भी श्रोता का उसके ऊपर हमें निर्भर नहीं है। Many people, Maharaj said, the problem is when they want to take class, they want to know how many people are there. If there's crowd, then they take class. If there's no crowd, they say, no, I don't have utsav. I'm not enthused, so I cannot take class. That is over-dependence on other people's mercy also. महाराज कहते हैं कि काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि प्रवचन उनको यदि क्लास देना होता है, प्रवचन करना होता है तो पूछते हैं कि कितने लोग हैं। यदि कम लोग होते तो उनका उत्साह मर जाता है, बोलते कि मेरा उत्साह नहीं है, मैं नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रोता की कृपा के ऊपर हमें ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। So we should be careful not to wait for others, but we have to be independent. हमें दूसरों के लिए ऐसी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए इन चीज़ों के लिए, हमें खुद स्वतंत्र रहना चाहिए। We cannot wait for conditions to become very perfect, then we can read Bhagavatam, then we can chant, then we can do seva. This is Kali Yuga. There is no perfection, only deterioration. हम सभी चीज़ें परफेक्ट हो जाए, फिर बाद में कुछ भागवतम करेंगे, ऐसी प्रतीक्षा में नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये युग कलयुग है और इसमें हर एक चीज़ का ह्रास होगा। And last point that's very important is artificial standards of living. और चौथा जो है, अंतिम जो है वो है कृत्रिम जीवन पद्धति। This artificial standard of living, it means that we try so hard and put so much energy just to maintain a lifestyle. Money is spent, time is spent, energy is spent, but in the end there is no time for Krishna. And all that we spend on, it will spend us. इसका मतलब ये होता है कि हम फिजूल की कोई भी जीवन पद्धति को निभाने के लिए बहुत सारा धन अर्जित करते हैं, ढेर सारा समय उसके पीछे बिताते हैं और इस प्रकार हम हमारा शक्ति भी गंवा देते हैं। इससे भी हमारी आयु ह्रास होती है। So we should live within our means. हम जितना कर सके और हमारी क्षमता जितनी हो उतने में ही हमें खेलना चाहिए। Maharaj told us how big a bed you want, महाराज कहते थे आपको कितना बड़ा बिस्तर चाहिए, how much big plate you want, कितनी बड़ी थाली आपको चाहिए, how many chapatis you can eat, कितनी रोटी आप खा सकते हैं, how many clothes do you want. कितने कपड़े आप पहन सकते हैं। Maharaj said in one day you don't wear 2 dhotis, isn't it? 1 dhoti, right? कहते हैं एक दिन में आप 2 धोती एक साथ नहीं पहन सकते, So why you need 10 dhotis then? तो फिर 10 धोती की भी क्यों आवश्यकता है। So this is simple living. इसे कहते हैं सरल जीवन। In this way, we can actually come out of the effects of Kali. ऐसा करके अनुसरण करके हम कलयुग की असरों में से बाहर आ सकते Yes, deterioration is there, हैं। इनका ह्रास तो होता ही है, but devotee's consciousness does not deteriorate. लेकिन भक्तों की जो चेतना होती है उसका कभी ह्रास नहीं होता। Then in the same shloka, this is all to do with short life. This is all to do with the short life that we are talking about. जो भी अब तक हमने जो चर्चा किया वो सभी किसके लिए होता है जिनका आयु कम है। One more symptom of Kali Yuga
is that everybody is quarrelsome. और एक और जो लक्षण है कलयुग का वो है कि सभी झगड़ालू होते हैं। We always find trouble with each other. हमको हमेशा एक दूसरे से तकलीफ हो जाती है। Small things we quarrel over. छोटी छोटी बातों में भी हमारा झगड़ा हो जाता है। Therefore, whole life, right, is spent always fighting with someone. इसलिए पूरा जीवन किसी न किसी के साथ झगड़ा करने में चला जाता Maybe first day, second day is alright. है। एक दो दिन ठीक है, ठीक चलता है। Maybe first month, second month is okay. एक दो महीना अच्छा चलता है। But after a while, we will find fault and we will quarrel. लेकिन अंत में तो हम कैसे भी करके दोष निकालते हैं और झगड़ा करेंगे। Next symptom is we are all lazy, Prabhupada says. तीसरा जो लक्षण है वो है कि हम सभी आलसी हैं। Prabhupada writes in Prabhupada, lazy means not that we are lazy to make money. That we are very particular. प्रभुपाद जी बताते हैं कि आलसी का मतलब ये नहीं कि पैसा बनाने में आलसी नहीं। Not that we are lazy to enjoy. We are very hard working when it comes to enjoyment. पैसे कमाने के लिए हम बहुत ही श्रम करते हैं और आनंद उठाने के लिए भी, भोग करने के लिए भी हम बहुत श्रम उठाते हैं। But Prabhupada says we are lazy to take up the devotional service. लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम भक्ति में सेवा को अपनाने के लिए आलसी हैं। So many excuses, so many reasons we give. But actually the reason is we are just lazy to perform bhakti. बहुत सारे ढेर सारे हम बहाने बना रहते हैं भक्ति ना करने के लिए, लेकिन सही मायने में तो हम भक्ति अपनाना नहीं चाहते हैं, उसके लिए आलसी हैं। Next symptom of Kali Yuga is we are misguided. अगला जो लक्षण है कलयुग का वो है कि हम सभी भ्रमित हैं। Because we don't follow the spiritual authorities. Other people are there. And therefore they will misguide us actually. क्योंकि हम आध्यात्मिक जो सत्ताएं हैं, जो प्रमाणभूत अधिकारी हैं, उनका अनुगमन नहीं करते, इसलिए दूसरे भगने वाले हैं। If you don't surrender to one who is worthy of shelter, then your surrender will misguide you. यदि जो शरण लेने योग्य है, मार्गदर्शन देने योग्य है, उनको आप शरणागत नहीं होते हैं, तो आपको उदारों के पास जाना है। So Sharanyam is very important. शरणयम महत्वपूर्ण है And then Sharanam will come. और फिर शरण आता है। And the other point is, everyone is unlucky. और दूसरा जो लक्षण है वो क्या है कि सभी दुर्भाग्यशाली हैं। How to describe unlucky? Some people say, no, I'm very lucky, but you are lucky. How to understand everyone is unlucky? ये अनलकी जो दुर्भाग्य जो शब्द है उसको कैसे वर्णन करो, क्योंकि लोग कभी कहते हैं कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, बहुत ही शुभशाली हूँ। In Padma Puran, just when Kali Yuga was starting, Parvati Mata asked Lord Shiva, I have heard from Shastras that in Kali Yuga, everyone is unlucky. So how is it that they are unlucky? तो पद्म पुराण में पार्वती माता भगवान शिव जी को पूछती है, Parvati Mata. पूछती है भगवान शिव जी को कि मैंने देखा है कि कलयुग में सभी दुर्भाग्यशाली होंगे, तो ये दुर्भाग्य कैसा होता है? And then Lord Shiva explains that when we say we are unlucky, that means we are full of misfortune actually. तो शिव जी कहते हैं कि जब हम बात करते हैं कि हम कलयुग में सभी अशुभ होंगे, उसका मतलब होता है कि सभी दुर्भाग्यशाली। You know, misfortune means something very fortunate has happened to you, but you don't use it. दुर्भाग्य का मतलब ये होता है कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हुआ है, सद्भाग्य हुआ है, लेकिन आप उसका उपयोग ही नहीं कर रहे। Like Maharaj gave us devotional service, but we are not serious about it. That is unlucky, that is misfortune. जैसे कि महाराज ने हमको भक्ति में सेवा दी है, लेकिन हम उसको अपना नहीं पा रहे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है, इसे दुर्भाग्य कहते हैं। So Lord Shiva said, I will show you practical demonstration of misfortune. फिर भगवान शिव जी ने कहा कि मैं तुमको व्यवहार में एक उदाहरण दिखाऊंगा दुर्भाग्य का। So Lord Shiva came, in disguise to the world. तो भगवान शिव एक अलग से वेश बदला करके दुनिया के सामने आए। So one Brahmana was there, he was very poor, no money at all. तो एक गरीब ब्राह्मण था, उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, धन नहीं था। So, and they had no food also. और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। So what happened was, because they had no food, the Brahmana somehow or another, because of his parents, his wife, all these people, he went to the marketplace, and he was just begging for something. क्योंकि उनके पास घर भी नहीं था और खाना पीना भी नहीं था, इसलिए वो बाजार में चले गए उनके परिवारजन के साथ, माता पिता सभी के साथ, ताकि उनको कुछ भिक्षा मांगे तो मिले। So when that happened, what happened was, Lord Shiva took the position of a fruit, watermelon seller. तो क्या हुआ कि भगवान शिव ने वाटरमेलन सेलर, He was selling watermelon.
भगवान शिव ने एक रूप धारण किया खरबूज बेचने वाले। So when he became watermelon seller, he just the Brahmana came and Brahmana said, "I'm very poor. I don't have any money. Can I take something and later I pay you back?" तो ये ब्राह्मण उन्हीं के पास आया और ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पास धन नहीं है, लेकिन जब मेरे पास आएगा तब मैं आपको दे दूंगा, क्या चलेगा? And so what happened was, Lord Shiva said, "All right, you can take this watermelon and later on you can pay me." तो भगवान शिव ने कहा कि कोई बात नहीं, आप लेके जाइए, आपके पास जो भी पैसा हो तो मुझे दे दीजिए। Now unknown to the Brahmana, because Lord Shiva is Lord Shiva, in the watermelon there were 2 gold coins inside the watermelon. लेकिन वो तो भगवान शिव को जानता नहीं था, लेकिन भगवान शिव को शिव जी है, उन्होंने वो खरबूजे के अंदर 2 सोने के सिक्के डाले हुए। Now if you buy watermelon, what do you do with watermelon? यदि आप खरबूज खरीदते हैं तो आप क्या करोगे वाटरमेलन के साथ? You cut it and eat it, isn't it? आप उसको काटोगे और खाओगे। If you cut the watermelon, what will you find here? You'll find the 2 gold coins. यदि आप ऐसा खरबूजा उसको काटोगे तो आपको क्या मिलेगा? उसमें से सोने के सिक्के मिलेंगे। So actually Lord Shiva was being very kind to the Brahmana. तो सही मायने में कहे तो भगवान शिव तो वो ब्राह्मण के ऊपर कृपा कर रहे थे। So the Brahmana took the watermelon and he went home. ब्राह्मण ने वो खरबूजा ले लिया और घर पे चला गया। And when he went home, his wife said, "How did you manage to buy the watermelon?" लेकिन उसकी पत्नी ने पूछा कि आपने ये तरबूज कैसे खरीद लिया? And he explained to her, this kind Brahmana, who's actually Lord Shiva, gifted me the watermelon. तो उन्होंने बताया कि ऐसा एक दयालु ब्राह्मण था, उसने मुझे ये गिफ्ट कर दिया। So then the wife thought, actually if he has given you watermelon, then why should we eat the watermelon? तो उसकी वाइफ ने कहा कि भले ही उन्होंने दे दिया है, वो गिफ्ट में दिया है, लेकिन हमें उसे खाना क्यों चाहिए? Better we sell the watermelon हमें उसे बेच देना चाहिए and we'll get a little bit more money and we can buy other things also. तो हमारे पास कुछ और ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो हम कुछ और चीज़ें खरीद सकते हैं। So Brahmana was thinking, my wife is very smart. ब्राह्मण ने सोचा मेरी पत्नी कितनी स्मार्ट है, This is how we should make some money. इस प्रकार हम कुछ मनी बना सकते हैं। And so they sold the watermelon to their equally poor neighbor. तो उन्होंने इसी तरबूज को उनके जैसे ही गरीब पड़ोसी को बेच दिया। And Lord Shiva told the Parvati Mata, this is Kali Yuga. अब ये दिखा करके भगवान शिव जी ने कहा कि देखो इसे कहते हैं कलयुग। We have gold with us actually. हमारे पास सोना है And we have to accept that whatever Krishna has given, we accept it in the ordinary course of activities. और जो कुछ भी हमें कृष्णा ने दिया है उसको हम साधारणतया स्वीकार करते हैं। Watermelon is there, you eat it. आपके पास तरबूज है तो खाओगे। If you come to temple, you chant. आप मंदिर आते हैं तो जप करो। But if you come to temple and you are doing politics, यदि आप मंदिर आते हैं और राजकारण खेलते हैं then you have missed the whole value of the temple. तो आपने पूरे मंदिर की जो कीमत है वो गंवा दी। Just like if Krishna presents you with bhakti and you don't use it, जैसे आपको कृष्णा भेंट देता है भक्ति की, लेकिन आप उसका उपयोग ही नहीं करते। you bring your friend to the temple आप अपने मित्र को मंदिर लेके आते and then after that you never come again. हैं और आप आते ही नहीं। This is misfortune. इसे कहते हैं दुर्भाग्य। You know, one very senior disciple of Radhanath Maharaj, Yudhishthira Prabhu. आप जानते होंगे राधानाथ महाराज जी के बहुत ही वरिष्ठ शिष्य हैं। 8 years his friend tried to bring him to Radha Gopinath temple. 8 years. 8 साल उनके मित्र को लगा इनको मंदिर लाने का। Always give excuses. हमेशा वो बहाने। But finally when his friend brought him there, then he never left the temple. लेकिन जब उनका मित्र उनको मंदिर लेके आने में सफल हुआ, फिर वे कभी वापस ही नहीं गए। But after that his friend disappeared. लेकिन 8 साल के बाद उनको वापस मंदिर में लाने के बाद उनका मित्र मंदिर से ही चला गया। So this is misfortune. इसे दुर्भाग्य है। Do not miss your fortune of being a devotee. आपका जो सौभाग्य है भक्त बनने का, उसको दुर्भाग्य में तो उसको गवा मत दीजिए। That is why in this shloka, Shukdev Goswami is saying that in Kali Yuga, we are all driven by the mode of passion. इसलिए शुद्धदेव गोस्वामी इस श्लोक में बता रहे हैं कि कलयुग के अंदर हम सभी रजोगुण के द्वारा बहे जा रहे हैं। And in 14th chapter of Bhagavad Gita, the symptom of the mode of passion is given very nicely. और भगवद गीता में 14th chapter.
14वें अध्याय में ये रजोगुण के लक्षण बहुत ही सुंदरता से बताए गए हैं। Krishna says in the 14th chapter that the mode of passion is characterized by hankering. कृष्ण बता रहे हैं कि रजोगुण का जो स्वभाव है वो क्या है कि हम किसी चीज के पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं। Unlimited desires अनंत हमारी कामनाएं होती हैं and longing, always wanting something. और कुछ न कुछ चीज़ों की हम मांग करते रहते हैं, हमें कुछ न कुछ चाहिए होता है। And this is the reason why when we perform an action, it is always materially motivated and it is fruitive. और इसलिए ऐसे स्वभाव में रह करके जब हम कुछ करते हैं तो जो कुछ भी हम करते हैं उसके जो परिणाम होते हैं वो हमेशा हानिकारक है। So if you come to the temple with unlimited desires, यदि आप अनंत कामनाओं के साथ यदि आते हैं you will become restless in the तो temple. आप मंदिर के अंदर भी चंचल रहोगे, Because actually you're not coming for Krishna. क्योंकि आप कृष्ण के लिए तो नहीं आ रहे, You're coming to fulfill your material desires. आप अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए आ रहे हैं। Krishna will fulfill your material desire and send you outside. कृष्ण आपकी भौतिक इच्छाओं को पूरा कर देगा और आपको कंपाउंड के बाहर बता देगा And you continue to suffer the effect of Kali. और आप कलियुग की असरों को भुगतने के लिए जारी रखोगे। That is why in this material world, those who don't follow the instructions of Shastra, they are always in difficulty. इसलिए ये कलियुग में जो कोई भी व्यक्ति शास्त्र का अनुसरण नहीं करता है, उनकी शिक्षाओं का पालन नहीं करता है, हमेशा मुसीबत में घिरे रहते हैं। You know, in 1623 of Bhagavad Gita, this point is very nicely stated. 16वें अध्याय भगवद गीता के 30वें श्लोक में ये मुद्दा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। That verse is very important. Yaha Shastra Viddhim Utsrajya Vartate Kama Karataha. In that shloka, Krishna says very nicely, anyone who discards the scriptural injunctions, ये श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति शास्त्र की शिक्षाओं का उल्लंघन करता है, इनकार करता है, and if you act according to your own whims, your own fancies, और वो व्यक्ति अपने मन के मुताबिक, अपने खुद के तत्वज्ञान के मुताबिक वर्तन करना शुरू कर देता है, you will not attain perfection, तो उनको कभी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, you will not attain happiness, उनको कभी खुशी भी प्राप्त नहीं होगी, and you cannot attain the supreme destination. और परम गंतव्य स्थान जो है वो भी हमको कभी नहीं मिलेगा। And Prabhupada writes in the purport something very important for all of us. और नौका जी तात्पर्य में बहुत ही सुंदर हमारे लिए रखते हैं। Even if you follow all the rules and regulations of Shastras, but if you do not come to Krishna, that is also a waste of time. यदि आप शास्त्र के सभी नीति नियमों का पालन भी कर रहे हैं विधिवत, लेकिन कृष्ण की ओर नहीं आ रहे हैं, तो भी वो सब क्या है। Many people follow the rules of Shastra, they follow moral codes also, but they don't accept Krishna as supreme. काफ़ी सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं दुनिया में कि जो बहुत सारे विधि विधानों का पालन करते होते हैं शास्त्रों के, और नैतिकता का भी पालन करते होते हैं, लेकिन वे कृष्ण की ओर नहीं आते। And second point Prabhupada says, even if you say, I accept Krishna is supreme, और दूसरा मुद्दा प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि आप स्वीकार भी कर लें कि कृष्ण परम है, but if he does not engage in the service of Krishna, all his attempts are spoiled. लेकिन ऐसा मान कर लेने के बाद नहीं चलेगा, यदि वो कृष्ण की सेवा में व्यस्त नहीं होता है तो भी सब कुछ व्यर्थ है। This is very important point for us, ये हमारे लिए भी कितना महत्वपूर्ण है, because all of us accept Krishna as supreme personality of Godhead. क्योंकि हम सभी ने कृष्ण का पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया है, But how much are we engaging in his service? That is the question. लेकिन हम उनकी सेवा में कितने रत हैं, ये हमारे लिए प्रश्न है। Therefore, that's why Prabhupada writes in the purport here that the Jains, they accept Rishabdev as their original preceptor. इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि तात्पर्य में कि जैन जो है वो मानते हैं कि ऋषभदेव जो है वो उनके प्रणेता है, But even though they say they accept him, do they follow his instructions as given in Bhagavatam? और भले ही मैं उनको मानते हो अपने प्रणेता अपने संप्रदाय के, लेकिन क्या वे उनका पालन करते हैं सही मायने में? So if we just say we are accepting someone, you are my spiritual master, I accept you as Siksha Guru, you are my authority, but what are you doing about it? Are you really following their instructions? That is the key. हम भी ऐसा ही कुछ करते हैं, हम आध्यात्मिक गुरु का स्वीकार करते हैं कि हाँ मैं आध्यात्मिक गुरु का स्वीकार करता हूँ, मैं आप सभी का शिष्य हूँ, लेकिन ये कर लेने के बाद हम उनके लिए क्या करते हैं, हम उनकी कैसे सेवा करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। Ekalavya is a very good example in Mahabharata. महाभारत के अंदर एकलव्य जो है वो उत्तम उदाहरण है। He really wanted to have Drona as his teacher. वो सही मायने में चाहता था कि द्रोण जो है वो उनके शिक्षक बने।
And actually he approached Dronacharya. और वे द्रोणाचार्य के पास गए भी, But Dronacharya denied him. लेकिन द्रोणाचार्य ने उनको इनकार कर दिया। He said that if you accept me as spiritual master, then this is my first instruction to you. उन्होंने कहा कि यदि आप मुझे गुरु के रूप में स्वीकार करते हो तो आपके लिए मेरी पहली ही एक आज्ञा है, You should not be an expert archer. आपको धनुर्धर नहीं बनना चाहिए। That was his instruction. ये उनकी पहली शिक्षा थी। But Ekalavya did not hear him. लेकिन एकलव्य ने उनको सुना ही नहीं। He went far away into the forest. वो जंगल में अंदर चला गया। From the sand, he made a statue of Dronacharya. रेत में से वो उसने द्रोणाचार्य का पुतला बनाया Then he worshipped him. और उनकी पूजा की And then every day he practiced in front of him. और उनके सामने प्रतिदिन वो अभ्यास करता। This is Ritvik. ये ऋत्विक ऐसा है। That means the Guru is alive. You don't follow the Guru, but you put picture and you say, now I will do everything and you are my Guru. गुरु हाजिर है, उपस्थित है, जीवंत है, लेकिन फिर भी हम उनके फोटो रख के उनके सामने कुछ न कुछ उत्पटा करते। So Ekalavya continued that way. एकलव्य ने ऐसे जारी रखा। And one day, when the Kshatriyas, the Kauravas, they were all in the forest and they were all having a picnic and they were relaxing, suddenly a dog, wild dog came in front of them and started barking and opening its mouth ferociously. तो एक बार क्या हुआ कि सभी कौरव खेलते खेलते आवास के ऊपर थे, जंगल के अंदर गए हुए थे, और तभी क्या हुआ कि एक जंगली जो कुत्ता रहता है वो उनकी ओर आगे आया। And Arjuna wanted to stop the barking of the dog. So he put an arrow to the bow. But before he could shoot, 7 arrows went into the mouth of the dog. और अर्जुन तैयार हो गए अपने धनुष्य से, अपने तीर से कुत्ते को रोकने के लिए, लेकिन अर्जुन अपने तीर को चले उससे पहले ही किसी ने उसके कुत्ते के मुंह में 7 तीर घुसे दिए। So everybody looked around and wondered, who is the person who shot the arrows? सभी आश्चर्य से चकित हो गए कि किसने ये सब किया। Arjun was a bit disturbed. Who is this person who can shoot 6, 7 arrows before I can shoot 1 arrow? अर्जुन भी चकित हो गए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जो तीर चलाने से पहले ही 7 तीर छोड़ दे। And then they saw this Nishada prince and they asked him, who are you and who is your spiritual master? Who is your master? और तब उन्होंने इस निषद राजकुमार को देखा, एकलव्य को देखा और उन्होंने पूछा कि आपके गुरु कौन है? And he said, Dronacharya. और उसने कहा कि द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं। Arjuna was thinking, hey, how come I don't know Dronacharya has a disciple like this Nishada prince? और अर्जुन सोचने लगा कि मुझे क्यों पता नहीं कि द्रोणाचार्य के पास ऐसा निषद राजकुमार है। So they all went back and they asked Dronacharya, is he your disciple? वे सभी द्रोणाचार्य के पास वापस गए और उन्होंने कहा कि क्या ये सही में आपका शिष्य है? Arjuna particularly was disturbed. अर्जुन खुद विचलित हो गया। But Dronacharya was very calm. He said, come, let us go and see my disciple. लेकिन द्रोणाचार्य बहुत शांत थे। उन्होंने कहा चलो हम चलते हैं, मेरे शिष्य को देखते हैं। And so when Dronacharya appeared before Ekalavya was very happy. He washed his feet, he fell at his feet, and he offered him so much of hospitality. और जब द्रोणाचार्य आया उनके समक्ष, एकलव्य के समक्ष, तो एकलव्य ने उनकी बहुत ही आवभगत की, उनके चरण प्रक्षालन किए, उनके लिए फूल बिछाए, उनके लिए बैठने की व्यवस्था की, सब कुछ किया, उनको प्रणाम किए। So now Dronacharya said, when did I instruct you of this? फिर द्रोणाचार्य ने पूछा कि ये सब मैंने आपको कब उपदेश दिया? And he said, see, I put your picture, your statue here, and every day I'm shooting the arrows. तो उसने कहा कि देखिए मैंने आपका पुतला बनाया है, मैं आपकी पूजा करता हूँ और फिर इसका अभ्यास करता हूँ। Actually, he never answered the question. लेकिन सही मायने में एकलव्य ने जवाब नहीं दिया। So now Dronacharya said, I'm very pleased with you. फिर द्रोणाचार्य क्या कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। Arjuna was very perplexed. अर्जुन बहुत ही भ्रमित हो गया। If you accept me as Guru, where is your dakshina? द्रोणाचार्य ने कहा कि यदि आप मुझे गुरु के रूप में मानते हैं तो मेरी दक्षिणा कहाँ है? And Ekalavya said, whatever you ask, I will give. एकलव्य ने कहा कि आप गुरुदेव जो भी मांगो मैं आपको दे दूंगा। So Dronacharya said, give me the thumb of your right hand. द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम्हारे जो राइट हैंड है उसका अंगूठा मुझे दो। And immediately Ekalavya cut off his thumb and gave it to Dronacharya. तुरंत एकलव्य ने अपना अंगूठा काट दिया और द्रोणाचार्य को दे दिया। Many people who don't understand this story, they say that Ekalavya is a very good example of a loyal disciple. काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इस कथा को ठीक से नहीं समझते, इस प्रसंग को। वे कहते हैं कि एकलव्य जो है वो उत्तम शिष्य है, But Shastras tell us he is the complete opposite. लेकिन शास्त्र में बताते हैं कि वो सबसे निकृष्ट शिष्य है। Because
in the first place, the most important instruction that you cannot continue with this, he did not obey. क्योंकि द्रोणाचार्य के द्वारा दिया गया पहली शिक्षा कि आपको मनोवितर नहीं बनना है, उसको ही उसने त्याग कर दिया। So when Dronacharya asked for dakshina, he was actually punishing Ekalavya. जब द्रोणाचार्य अंगूठा लेके आए उसका, तब सही मायने में तो कहे तो द्रोणाचार्य उसको दंड दे For not following his instructions. क्योंकि उन्होंने उनका उपदेश का पालन नहीं किया। This is a subtle but very important point, Prabhu's Mataji. It's very, very important. छोटा दिखता है, सूक्ष्म है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। This is the reason why many of us cannot advance in devotional service. यही तो कारण है कि जिसकी वजह से हमारे में से बहुत सारे लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। We take initiation, शिक्षा तो ले लेते हैं, but we are not interested in hearing the instructions. लेकिन हम उद्देश्य श्रवण करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए हमको रस नहीं है। Or we hear some instructions and other instructions we don't hear. We ignore. या तो हम कुछ ही हमको जो अच्छा लगे उतना ही सुनते हैं, बाकी काम छोड़ देते हैं। This one suits me, this one doesn't suit me. ये मुझे अच्छा लगता है, उनका नहीं लगता है, नहीं। Then, bhautikānām ca bhavanām. Our devotional service will deteriorate because it is material. फिर क्या होगा? भौतिक का नाम जपाना, हमारा भक्ति में सेवा का विकास होगा। Do you see this very important point? क्या आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ये महत्वपूर्ण पॉइंट को? Devotional service is not about picking and choosing what you want, what you don't want. भक्ति में सेवा हमारी पसंद के ऊपर आधारित नहीं कि हमको जो अच्छा लगे वो उठा लें। And we must always be guided by the principle of what will please our spiritual master. हमको हमेशा एक ही मार्गदर्शन होना चाहिए हमारे माथे पे कि मेरे गुरु महाराज को क्या पसंद होगा। Not what will please us. ऐसा नहीं हमें मानना है या समझना है कि मुझे क्या पसंद है। That's why Srila Prabhupada is saying in the purport, if we are really following Rishabdev, we should follow his instructions. इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सही मायने में यदि हम ऋषभदेव को मान रहे हैं तो हमें उनकी आज्ञा का पालन करना है। And not just his form. खाली उनका स्वरूप का नहीं। So very often today, they are following the form, but they are not following instructions. आजकल भी हम देखते हैं कि लोग स्वरूप का तो पूजन अर्चन कर लेते हैं, लेकिन शिक्षाओं का अर्चन नहीं कर पाते। We come and take darshan of Maharaj, हम आते हैं, महाराज के दर्शन करते हैं, but we must ask ourselves, am I behaving in such a way that Maharaj will be pleased with me? Am I behaving in such a way that I am following the instructions of my spiritual master? लेकिन हमें अपने आप को खुद को टोलना चाहिए, खुद को प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या मैं महाराज को जो पसंद है वैसा बर्ताव कर रहा हूँ, या मेरा बर्ताव वैसा है कि जिससे महाराज प्रसन्न हो। If we are not, bhautikānām ca bhavanām. यदि हम नहीं है वैसे तो भौतिक का नाम से भावना नहीं। So this is the most important point today that we want to share. तो यही आज का जो प्राथमिक मुद्दा था जिसको हम शेयर कर रहे हैं। Simple example from Srila Prabhupada Leela. श्रील प्रभुपाद जी की लीला में से एक बहुत ही सरल उदाहरण है। Srila Prabhupada asked one of his disciples, I want some water. श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार अपने एक शिष्य को कहा मुझे पानी पिला के दो। Disciple went to kitchen, came back with milk. डिसाइपल शिष्य जो था वो रसोई घर में गया और दूध ले गया। Prabhupada said, I asked for water. प्रभुपाद ने कहा कि मैंने तो पानी मांगा है। And the disciple said, Prabhupada, water is just water, but we thought that we had milk. Milk is better. Please take milk. तो शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद जी पानी तो पानी होता है, लेकिन हमने सोचा कि हमारे पास दूध है तो दूध तो पानी से बेहतर होता है। But Prabhupada said, I want water. प्रभुपाद ने कहा मुझे पानी चाहिए। Later, Prabhupada spoke to his disciples. फिर बाद में प्रभुपाद जी ने अपने शिष्य से बात की। And this point is very important. ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। If the spiritual master wants something, why we have to be smarter and give something that we think is better? जब गुरु महाराज हमसे कुछ चाहते होते हैं तो हमें क्यों खाली फुकट में स्मार्ट बनना चाहिए कि मैं कुछ और करके दिखाऊँ या गुरु महाराज को पसंद आएगा? That's because we want to please our mind, not please the spiritual master. इसका मतलब ये है कि हम हमारे मन को प्रसन्न करना चाहते हैं, ना कि आध्यात्मिक गुरु। Ram Navami celebrations are over, रामनवमी जो महोत्सव था वो खत्म हो गया, but doesn't mean your devotional service is over. इसका मतलब ये नहीं कि हमारी भक्ति खत्म हो गई। Devotional service should become deeper. भक्ति में सेवा और गहरी होनी चाहिए। Devotional service is not dependent on festivals. भक्ति में सेवा उत्सवों के ऊपर आधारित नहीं है। Yeah, festivals give us enthusiasm, हाँ है कि उत्सव हमें उत्साह देते हैं, but love for Krishna must exceed just celebrations. लेकिन कृष्ण का जो प्रेम है वो इन उत्सवों से भी परे होना चाहिए। It must be daily.
वो प्रतिदिन होना चाहिए। If you love someone, you love them daily. यदि आप किसी को चाहते हैं, प्रेम करते हैं, तो आप उसको रोज प्रेम करोगे ना। You don't love them on festival days. खाली उत्सव में उनको चाहोगे, Or only on birthday I love you very much, after that finish. या तो खाली जन्मदिन के ऊपर ही आप उसको चाहोगे, बाकी दिन नहीं। That is not devotional service. भक्ति में सेवा ऐसी नहीं है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रीला प्रभुपाद की, श्रीला महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव की, निताय गौर प्रेमानंद। ग्रेस देवकीनंदन प्रभु की जय श्री प्रभुपाद, श्री गुरुदेव की। Are there any questions? Two questions. Yes. Sorry, we can't. Hare Krishna Prabhu, from Guru Maharaj reading scripture, we can know that Bhagavad Gita indicates that we have to be renounced from our parents' material life. But we know, but after some time by material we forget that it is for like it is as time passes it get destroyed. So how to be practically, because we met our parents, everything that is destroyable every day. So you're asking how to sustain. How do we sustain? Is it? The best way to sustain this mood of devotional service is that we must constantly be in sadhu sangha. Reading Srila Prabhupada's books is very, very important. And having the desire to serve Krishna daily. We must also be practical in our approach. Sometimes we use Bhagavad Gita to do the things we want to do. And then we say, hey, Bhagavad Gita has said this, so I want to be like that. But we have to understand what our acharyas say about Bhagavad Gita. And if we are not clear, then we should ask the authorities or our spiritual masters. Otherwise, our mind is very smart. It is easy for me to take something from Shastra here, something from Shastra there, and do things according to what I want. Everybody does that. Some people say, why should I come to a temple? I have so many family duties. Some people say, I have so many family duties, I cannot come to temple. But the duties are never going to end. Never going to end. We have to find a balance between doing our family and coming to temple. Balance means not perfect, bro. Balance means always sometimes like this, sometimes like that. That is the meaning of balance. So you will never find a perfect situation. But just try your best. And Maharaj would tell us, don't think so much. This thinking business is a problem. Think, then we don't do anything. That is also a problem. Just do it. And then you find that Krishna will help you. Is it helpful, bro? Yes, Prabhu. And one last question, how to measure our spiritual progress? How to? Measure our spiritual progress. How to measure spiritual progress? Actually, there are two ways to look at it. If you have a lot of time, then you have time to look at your progress. But if you're very engaged in service, Prabhu, actually you don't have time to measure your progress. That is progress. That is progress. If you're so engaged and you are so filled with so much of service, there's no time to think, am I doing service? If you think you have time to think, am I doing service, that means you're not doing service. Because you have time to think, yes. So, but at the same time, we should be alert about whether we are doing the service in such a way that people are pleased, our spiritual master is pleased. That thinking is needed. But there must be a balance. It cannot be that we are always thinking and not acting. We should act. And then every month we should see, how am I doing? Am I alright? Many devotees do this, They have a Siksha Guru and they report to the Siksha Guru. In temple, we report to President, and we tell him how our sadhana is doing. What am I doing? What is my challenge? Then we are accountable to someone. Otherwise, if there's no accountability, who are we going to turn to? That is also dangerous. So both are needed. But if you're doing nice service, you're following the principles of devotional service, frankly speaking, you won't have much time. No time is good time for Krishna consciousness. Okay? Thank you very much.
Shraddha? Yeah, 2-3 minutes. So my question is that according to Dronacharya and Eklavya, Dronacharya gave punishment to Eklavya. So question is that if we do not follow the instruction of spiritual master, so Maharaj is also some kind of give punishment. Oh, if we don't follow instruction of spiritual master, will Maharaj punish us? Actually, Maharaj doesn't have to punish us. Those who don't follow the instructions of the spiritual master, Krishna is ready to punish us. Spiritual master doesn't have to do anything. Ambarish Maharaj just stood there. He did not have to do anything. And just Krishna with Sudarshan Chakra, he just tortured Ambarish, the Durvasa Muni. He didn't have to do anything. So actually, those who disobey the orders of the spiritual master, they actually displease Krishna. Krishna becomes very upset. And if Krishna becomes upset, then what is your punishment? Your punishment is that you fall under the material energy of Krishna. You will fall into the rules of karma, the stringent rules of the law of material nature. But a devotee who is following the instructions of his or her spiritual master, they are not under the external potency of the Lord. They come under the internal potency. That means they are always protected. They are always protected. Is that alright? Because actually Maharaj has no time to punish people. Let Krishna do that actually. Yes, Prabhu. Hare Krishna. My question is that you said that in Kali, symptoms of Kali, we are lazy, quarrelsome, misfortune. I'm not saying Bhagavatam. Yeah, you mentioned that in lecture. So people coming from outside or devotees from other temples, so they listen over YouTube or social media some lectures. Say they have some knowledge. Somewhat? Knowledge. They have some knowledge. They listen someone, right? So when they come to temple, so as you said that we don't come to temple to please Krishna. Sometimes we come for material motives. So what happens is that when they come, they have certain expectations. And obviously, when they are not fulfilled, they will get frustrated. Like when I used to come initially, when I came from Pune to Rajkot, my expectation was that I will do lot of your preaching and this and that. And then Maharaj, then Vaishnava group said that this is not the way. First you have to focus on purity. And he said that Maharaj way is first you will get worst. Then Maharaj will give you bad, then better, then good, then if you survive then best. So this is the way to do devotional service. So I got that right direction. But till that moment, I was ready to submit in the process. But few people are not ready to submit. Either they will take more time, or they are busy in judging the situation of people. So to retain or sustain people, because everyone has their own mind. So how to guide them that they don't leave the process? Otherwise, what is our duty to serve them? Very good question. Actually, Prabhu, there is only so much we can do for anyone. We can ask them to come, we can ask them to serve, we can share with them, what is the mood of a congregation. Sometimes some people will fit, sometimes some people won't fit. Sometimes some people will fit some place, sometimes some people will fit another place. Krishna is so kind that there is so much of variety. Those who can fit, they will stay. Those who can't fit, they will leave. But we try, but we don't compromise on what is the existing mood of the temple. That is very important. If this is the mood of the temple, then we must respect the mood. If I walk into my father's house, I have to follow the rules of my father. If my father walks into my house, then father will know I have my own style of doing things. Like that, we are walking into the house of the father, Adhanila Mother. He has his own mood in this dham. Like that, in every center or every temple, there is a certain mood. In some centers, there is more emphasis on book distribution. Some centers, lot of prasad distribution. Some centers, plenty of kirtan. Everyone is doing something. But we have to go according to where we are. And if that is according to what Shastra is doing, then be peaceful. Be happy. That's all.
If we are not happy with it, then we have to move. What else can we do? Right? If we can't fit, we have to move. But we should understand whether I'm getting happiness where we are. And that's why you use a very important word. Submission is the success story of devotional service. Those who submit, they will become successful. If you submit to the mood of a temple, you will become successful. If you try to be very smart, then you do your own things. This is what 1623 of Bhagavad Gita is also saying. Right? So it's a very practical thing to do. Don't worry for those who are with us, or don't worry for those who are not with us. Most important thing Maharaj said is you make sure your head is above the water. Your head must be above the water. Right? If your head is above water, Prabhu, one day you can help someone. But if your head is below the water, then somebody has to help you. That's why we must become all self-sufficient, all strong in our own sadhana. So we can assist the temple to grow. We are actually in the mood of serving the temple. Is it alright, Prabhuji? Yes, precious. Yeah, please. Nice question. We speak with the experience, realization. Yes. Now, I found in ISKCON now, everywhere, I'm talking about ISKCON itself, no? The beginning that all the young ones, they have that ambitious. Yes. Not their fault. Yeah. The Prabhupada is so catchy, immediately become, the words are there. But practically following is become very difficult. Was not I sent you the two emails. I think they were 45. Sorry. Yes, So, that is my own experience. Many times I share with everyone that any duty they joined us on, preaching mood is there, they're doing nice preaching also, but something little bit here and there happened, I could say balance. In spiritual also there are a lot of balance. And something else they happened, they first become frustrated or collapse. And they collapse so much that you say that somebody bring us here, he is not. This happened, many times happened. I have seen from Bombay temple, nice duty, they disappear. So you guys say that we have to put ourselves top. Days we can do someone else. Because Maharaj impresses always that we have to do our roles. Result is Krishna. Yes. Absolutely. Ultimately result is Krishna. Yeah. We have seen this, Very true. See, we have seen the Maharaj life also. Maharaj shows a pure duty. How many years he stay here? But I am not remember Maharaj did in Bhagavad Sapta. Not a Bhagavad Sapta. He is not interested. But interested how I can give nice praying. And with that praying, slowly I give devotional service to the all who are visiting. Yes. And now we can see that feedback. Whatever Maharaj or the seed planted, that is slowly sprouts. Yes. That we can see. A nice question for his nice answer. He told a nice thing that with the due course of time, I accepted the things. Yes. That is and we are not worrying for others. We try best. Yeah, we try. Is it okay, bro? No, very nice. That's the point. And I tell you, this is the way to live any time in Kali Yuga, anywhere. We have to adjust. Always we have to adjust. Srila Prabhupada writes in one of the purports that Prithu Maharaj and Indra, if you remember, they were fighting because they wanted to do the Ashwamedha Yajna. They were competing. This is Prithu and Indra. They are not ordinary people, very great or exalted personalities. Why they were competing? Because they had some envy in the heart. Some envy was there. But Prabhupada said, eventually they adjusted their envy. They adjusted with each other. And so the envy went. If you want to be successful in devotional service, learn to adjust. Adjust according to the place, according to time, according to circumstances. That is Acharyas. All the Acharyas have presented Krishna consciousness that way. Don't come in with only one way. You will become disappointed. It's not the fault of the authorities, not the fault of the temple, it's our mind. Oh, I'm thinking Krishna consciousness is like this. 3-year plan, 5-year plan, 10-year plan. There is no plan.
The plan is only Krishna's plan. That's all. Sometimes we are trained in education outside, and then we come into the world in ISKCON, and we think that we can utilize it. Yes, we can utilize it, but we must utilize it according to the principles of Shastras. It should not exceed the principles of Shastras. Very nice question. Thank you, Prabhu. Yeah, we should be, instead of playing, we should be playing actually. Very good point. Just be plain. Plain means be on the ground. That is plain. Plain means be in the sky. Nothing will happen actually. Nothing will happen. Thank you, Prabhus, Matajis. Krishna willing, I don't know when I will see you again. But let us see what Krishna wants and what Maharaj wants. Nursing Chaturasi. I think that is also Sunday, I think. Let us see, let us see. Jai Shri Prabhupada ki, Jai Shri Mahavishnu Goswami Gurudev ki, Ananta Kodi Vaishnavrinda ki, Srila Prabhupada ki, Srila Mahavishnu Goswami Gurudev ki, Jai Gaura Premanandi. I am going to miss everyone. I am going to miss.